I'm again asking you, is he looking good? Let me ask the ladies, is he handsome? Right now it's like all the lights are turned off and this is an amazing moment. You cannot see anything except Adiyogi. तो फोक्स अभी हम लोग निकल चुके हैं बैंगलोर से और आज हम लोग जा रहे हैं ईसा फाउंडेशन चिक्कबल्लापुर, जहां आज उसका इनॉग्रेशन होने वाला है। तो सदगुरु ने हमें स्पेशल इनविटेशन दिया, बुलाया कि अगर आप लोग नहीं आएंगे तो इनॉग्रेशन नहीं होगा। मजाक था वैसे, ठीक है, अधूरा सा लगेगा। तो हम लोग अभी बैंगलोर से राउंड आ चुके हैं, एक लाइक 1 आवर जर्नी कर चुके हैं और यहाँ से आई थिंक 1 आवर मोर। तो लेट्स सी हाउ द ट्रिप गोज। और जो इस स्पॉट में जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, दिस इज बिटवीन द एयरपोर्ट एंड मतलब क्या है, कुछ है क्या? तो हम लोग ऐसे स्पॉट में खड़े हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे हवाई जहाज दिखते हैं। और देखिए आपको हवाई जहाज दिख रहा है वहाँ पे। तो जब भी आप लोग यहाँ से होते हुए जा रहे हो तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्पॉट, जहाँ से आपको हर 5 मिनट में प्लेन टेक ऑफ लैंडिंग करते हुए दिखेगा। लास्ट टाइम मैंने अगर पहिया पकड़ लिया था उसका। टा-डा! सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ईसा फाउंडेशन एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस मच क्राउड। मतलब कम से कम लाखों लोग रास्ते में दिखे एंड लकली हम लोग ऊपर आ गए हैं, क्योंकि बहुत लोगों को बाइक अपनी स्टार्टिंग में पार्क करनी पड़ गई एंड वहाँ से दे हैव टू क्लाइम अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स अप हिल एंड काफ़ी उम्मीदें हैं एंड टुडे प्रॉब्ली वील स्पेंड द होल नाइट हियर। Adiyogi himself gave 112 ways through which a human being can attain to their ultimate nature. It is because of this, to honor him and also to remind people and to inspire people and also open a doorway, that Adiyogi is here, 112 feet tall. I'm again asking you, is he looking good? Let me ask the ladies, is he handsome? That's bang on. In our bodies, there is a little bit of pleasure. In our minds, a little bit more. In our emotions, a lot more. In touching the nature of our being, we rise above the creaturehood of our existence and become a cosmic consciousness. It is
Such beings who rise above this daily concern and rose above their individual self to get to explore the true nature and the fantastic and nameless ecstasies of our being. Such a being shall look down upon pathetic and desperate efforts of those who invent heavens to solace themselves and to deceive others. To be exuberant, to be intoxicated, and to be still at once gives you access to the innards of life. As you can see the energy of this event right now, like everything is so energetic that you feel the vibe. और अभी हमने यहाँ 2-3 घंटे बिताए हुए हैं. Almost everyone is leaving right now. So this whole event was truly electric, and lot of events were there. And we also listened to Sadhguru's speech, who gave us the overview about Adiyogi and why should he join ISA Foundation and what is the meaning of yoga. So he gave this wonderful speech, and that gave us little bit understanding about yoga and everything. I will say today it was very crowded, but yeah, if you have not visited this place, this is a must-visit place, because if you come here in the daytime, the scenic beauty that you have around this place is truly incredible. So yeah, I will say come here if you stay near Bangalore, and this place will surely mesmerize you. Right now it's like all the lights are turned off. You cannot see anything except Adiyogi. Remain as they could not tolerate the situation.